Okay, so let's start the lecture. We have discussed regular D classes, and we have shown that if any element of a regular D class is regular, then every element of D is regular. Okay, that we have seen. Now next we will see that in a regular D class, we know that every regular D class is a union of L classes and also a union of R classes. Now we'll see that if we have a regular D class, then in this regular D class, each L class contains an idempotent, and also each R class contains an idempotent. हर कोई L class जो भी regular D class में it's a disjoint union of L class. Okay, हम प्रूव करेंगे इसका जो भी L class होगा वो आइडेम्पोटेंट को कंटेन कर रहा है. इसी तरह से इसमें जो भी R क्लास होगा वो भी आइडेम्पोटेंट को कंटेन कर रहा है. लेट्स गो नेक्स्ट थ्योरम. Okay, so statement is in a regular D class, in a regular D class, each L class and each R class contains an idempotent. Each L class and each L class and each R class. Okay, each R class contains an idempotent. Proof. So suppose we have a regular D class and we have an element which is in L class, and let's take any of its L class. Okay, let's take any of its L class. And let D be a regular D class. Okay, let D be a regular D class, and we need to show that this L. Okay, let's write it like this. So then we have we know that then you write this, then D is equal to that we have seen it already. Then this D, it's equal to union of L class. Okay, A is in D. A is in D. We show that L class of A contains an idempotent for all A in D. Okay, L class of A contains an idempotent for all A in D. Since A is in D, so therefore A is D. क्या है? D is a regular D class. Regular D class का मतलब क्या है? Yes, regular D class. A is regular. Okay, A is regular because every element of D is regular. Therefore, A is regular. A is regular.
तो ये रेगुलर होने का मतलब क्या है? रेगुलर की ओके, सो देयर exists x belongs to S such that AXA is equal to A. Then XA is an idempotent. Then you see this XA is equal to XA, therefore XA is an idempotent. XA, therefore XA is an idempotent. Therefore XA is an idempotent. हम प्रूव करेंगे ये XA जो है ना ये L क्लास A में है. We show that this XA it's L related to A. Okay, तो इससे हम ये प्रूव करेंगे हर कोई L क्लास जो है वो आइडेंपोटेंट को कंटेन कर रहा है. So this XA is L related to A. We have, इसके लिए आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए. फर्स्ट इक्वेशन तो आपके पास है ही, दैट्स फ्रॉम रेगुलर प्रॉपर्टी, दिस इज इक्वल टू. तो आपको एलिमेंट एक्चुअली लेफ्ट साइड से मिलना चाहिए, लेफ्ट साइड. तो वो एलिमेंट ये है, एलिमेंट ऑफ S1 into A times A is equal to A. Okay, it's ये आपका एलिमेंट है. ओके, AXA is equal to A. Now we'll see that अगर हम A कोई एलिमेंट माने, do it like this, हम इसको ऐसे लिखेंगे AXA. okay, this leads to AXA equal to A. AXA ये आपका एक एलिमेंट है XA. दूसरा आपको प्रूव करना XA और A ये आपस में रिलेटेड है. तो XA के लेफ्ट साइड में भी आपको एलिमेंट मिलना चाहिए और ये इस A के बराबर होना चाहिए, वो आपको मिल रहा है. अब आपको A के भी लेफ्ट साइड में एलिमेंट मिलना चाहिए. A के लेफ्ट साइड में आप X लीजिए, XA वो आना चाहिए जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे A के साथ, ये आना चाहिए XA के बराबर. तो वो तो ये तो खुद ही XA ही है ना, इट्स इक्वल टू XA. तो आप ऐसा आप इसको लिख सकते हो. you can write this as U XA equal to A. Then V X equal to AX. तो U और V आपको मिल रहा है such that UXA equal to A and UX equal to AX, where this U is here A and V is here A. V is X, where U is A, V is X. यही तो एल रिलेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए. आपको दो एलिमेंट्स मिले चाहिए U and V in S1 such that UXA equal to A and V should be XA. Okay, it's XA here. Yes, exactly. It's XA here. आपको XA चाहिए. Yes, exactly. It's XA. V of A. So this V is X. Okay, U is A. U is A and V is X. Right. Okay, V is X. Okay, not to V. आपको V times A चाहिए ना, हम गलत लिख रहे. V A आना, V A हमने लिखा है V X, V A, V. Okay, so therefore this element XA, it's related to this element
XA it's L related to A, which implies that XA belongs to L class of A. Sorry, it's an L class of A. It's not cursive A. Cursive L, it's a simple L. It's a L class of A. So each L class contains an idempotent. So again, you can write again this D, it is union of our classes. A is in D, and this, and there exists X in S such that A X A is equal to A. अब मुझे ये जो अब XA ले हम या AX ले, आई थिंक मुझे AX लेना पड़ेगा यहाँ पर. AX is also identical. This implies AX it's equal to AX. So therefore AX is an idempotent. यहाँ पर AX idempotent because AX whole squared is equal to AX. Therefore AX is an idempotent. We try to show that this AX is R related to E. तो हम देखते हैं इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा. AXA is equal to A, ये तो है आपके पास. अब और लेटर मतलब एलिमेंट आपको राइट साइड में मिलना चाहिए, नॉट ऑन लेफ्ट साइड. तो दिस एलिमेंट इज ऑन राइट साइड. ओके, एक्स ए होगा ना. हाँ, एल में जो एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए वो आप ए लीजिए. ओके, तो ए यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा है, ए एक्स इज इक्वल टू ए. अब इस ए के लिए भी कोई एलिमेंट राइट साइड एग्जिस्ट होना चाहिए, सो दैट दिस इक्वल टू ए एक्स. So there is a problem here. How do I get this? L में होगा X से add. X मुझे अब मुझे राइट साइड में एलिमेंट मिलना चाहिए ना. सो और यहाँ मुझे AX लिखना है, AX. अगर मैं XA ही कर दूँ, XA पहले लिख दूँ AXA, ओके, AXA. क्योंकि मैंने AX लिया ना, AX, तो मैंने एक्चुअली ये लिखा AX मैंने लिया यहाँ पर एलिमेंट. AX अब AX के बराबर है, दैट्स राइट. तो राइट साइड में आपको A के लिए आपको राइट साइड. ओके, मैं गलत, मैं यहाँ लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, मुझे राइट साइड एलिमेंट लेना है. एलिमेंट मुझे राइट से लेना. ओके, AXA इज इक्वल टू A. तो आपका एलिमेंट क्या है, AX. ओके, और जो एक्स है वो आप समझिए वो A है. दिस इज योर U. सपोज ये आपका U है. तो ये आपके दो एलिमेंट्स जो आपको प्रूव करने वो रिलेटेड है. तो एक एलिमेंट U आपको मिल रहा है, अब V आपको मिलना चाहिए. तो अब V आपको अब A के लिए तो आपको यहाँ से X अब आपको लेना है A यहाँ से, और आपको फाइनली यहाँ मिलना चाहिए AX. और राइट साइड में आपको एलिमेंट चूज कर, दैट्स X. सो इट्स लाइक दिस, AXU, okay, is equal to A, and AV is equal to AX. So where this U is equal to A, and V is equal to X. So therefore this AX, it's R related to A, which implies AX belongs to R class of E. R class of E.
Now let's define inverse element in a semigroup. Inverse element ग्रुप्स में इनवर्स की डेफिनेशन है ना. ग्रुप्स में आपके पास आइडेंटिटी है, then you define an inverse element with the help of identity. Okay, तो सब इनवर्स के लिए आइडेंटिटी का होना जरूरी है. जहां तक जो अब तक जो आपने किया है, जो अब तक आपने ना अलजेब्रा पढ़ी है, बट in general it's not necessary for inverse that that structured set must have an identity. So here we try to generalize the definition of inverse. Okay, आपको बात समझ आ रही है? हम इनवर्स की डेफिनेशन को जनरलाइज करने की, क्या हम आइडेंटिटी के बगैर इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं? ये हमारा मतलब मेन मोटिव है. हाउ डू वी डू दैट? हाउ टू डिफाइन द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट विदाउट आइडेंटिटी. तो अब क्या नॉट इनवर्स को हम कैसे डिफाइन करें विदाउट आइडेंटिटी? ओके, विदाउट आइडेंटिटी. This if we have a group G with composition, okay, multiplication, we can take we don't need to write binary operation, क्योंकि अब आप वो graduations नहीं कर रहे, you are now doing MSc, so don't need to mention operation. Okay, तो वहाँ पर मेंशन करनी है ऑपरेशन जहाँ पर आपके पास कोई प्रिसाइज कोई सेट हो, तो वहाँ पर ऑपरेशन की ज़रूरत है. तो इन जनरल वी डोंट नीड टू राइट ऑपरेशन. सपोज जी इज अ ग्रुप, सो लेट E be identity of G. So what's the definition of identity? It's this: AE is equal to EA is equal to A for all A and G. And now what's the definition of inverse? If A is in G, we say the element B is inverse if AB is equal to BA is equal to inverse, is equal to the identity. So this B, it's inverse of A. Okay, can you write these two equations without involving an identity element, without involving the identity element of a group? आइडेंपोटेंट से हम कर सकते हैं? नॉट आइडेंपोटेंट्स भी जरूरी नहीं हो कि वो सेमी ग्रुप में हो. दैट्स नॉट नेसेसरी. देयर आर सेमी ग्रुप्स विदाउट आइडेंपोटेंट्स like natural numbers under addition. Okay, so I want to write this equation. I want to obtain the equation from this equation which is free from identity. Free from identity. So how do I do that? I will just multiplying the first equation by A. Okay, first equation by A. A is equal to EA, that's equal to A. And I will multiply second equation by B. I will get this equation B is equal to B. So these are the equations which are free from identity. And in this equation B is inverse of A actually. तो ग्रुप्स में अगर आपके पास ग्रुप्स में इस टाइप की दो इक्वेशंस होगी, A के लिए कोई B एग्जिस्ट हो रहा हो, such that ABA is equal to A, BAB is equal to B, then you can easily say that this B is an identity, because you can apply the cancellation law here. You can cancel these A and BB. You will get AB is identity, BA is identity, and it means that B is inverse of A. अगर आप ग्रुप्स में हैं. But if you are not in groups, then you cannot apply cancellation law. तो ये इक्वेशन ऐसी रहेगी. तो सेमी ग्रुप्स में हम इनवर्स की डेफिनेशन यही लिखेंगे. An element B is said to be an inverse of A if ABA is equal to A and BAB is equal to B.
सर ये रेगुलर एलिमेंट्स की डेफिनेशन ही है ना जी? रेगुलर में एक ही इक्वेशन है, रेगुलर में एक ही आपके पास है, ए बी ए इज इक्वल टू ए, हम कहेंगे ए रेगुलर है इफ देयर इज बी साइड ए बी इज इक्वल टू ए। रेगुलर में एक ही इक्वेशन है, ओके। इनवर्स में अब आपके पास दो इक्वेशंस है, ओके। सो लेट्स डिफाइन इनवर्स। let S be a semigroup, let S be a semigroup and A belongs to S, okay. An element B is said to be an inverse of A, इनवर्स ऑफ ए, हम कहेंगे इसको ये इनवर्स है ए का, इफ ए बी ए इज इक्वल टू ए एंड बी ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी। So clearly if A has an inverse then A is a regular element of S, clearly है ना। अगर A के पास inverse होगा, से B इसका inverse है, then you have at least this equation A B A is equal to A, but this gives A is a regular element ना। अगर A के पास inverse होगा then that element must be a regular element। So clearly if A has an inverse then A is regular, then A is regular, but converse need not be true if A has, converse is also true, in fact converse is true, but converse में क्या, अगर आपके पास A regular element होगा तो then there is X such that AX A is equal to है ना, but this X may not be the inverse of A, कोई और element exist होगा, मगर inverse इसका exist होगा, अगर A regular element होगा इसका inverse exist होगा, मगर वो inverse क्या यही X होगा जो हमें regularity से मिला है? That's not true in general। वो inverse कोई और element है, वो हम देखेंगे वो inverse कौन सा element है। And conversely, if A is a regular element, if A is a regular element, then there exists X in S such that AXA is equal to A। Now let's define A dash। usually A prime जो है ना, A prime हम usually inverse of A ना, inverse का जो A का inverse है ना वो हम A prime से denote करते हैं, इसका आप ख्याल रखिए। So let's define A prime। So put A prime is equal to X A X। We show that A prime is an inverse of A। So now let's check this। A prime तो तभी इनवर्स होगा जब A प्राइम A के बराबर होगा और A प्राइम A प्राइम के बराबर हो। Let's first simplify this one। A प्राइम A, क्या ये A के बराबर है? This is equal to A। What's A prime? It's X A X then A, but this one AXA is equal to A, then we have X A, again AXA is equal to A, and A prime A prime ये A prime के बराबर आना चाहिए। What's A prime? It's X AX, then we have A, then we have X AX। अब आपके पास क्या, आपके पास AXA किसके बराबर है? A के बराबर। It's X A,
Okay, this thing is A. Then we have again x a x. Now again this thing is A. It's equal to x a x, and that x a x is A prime as required. तो अगर A रेगुलर एलिमेंट होगा तो इसका इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट होगा. कन्वर्सली अगर A का इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो ये A रेगुलर एलिमेंट होगा. Okay, the inverse may not be unique in general as in case of groups. Inverse is always unique. Inverse may not be unique. Okay, inverse may not be unique. और इनवर्स अगर यूनिक होगा, अगर सेमी ग्रुप का, अगर सेमी ग्रुप में हर किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट होगा और अगर वो यूनिक होगा तब उस केस में उस सेमी ग्रुप को कहते हैं इनवर्स सेमी ग्रुप. ओके, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे इनवर्स सेमी ग्रुप. बट इनवर्स मे नॉट बी यूनिक इन जनरल. ओके, so let S be a band. अगर आपके पास बैंड होगा, let S be a band and A belongs to S. क्या ये A का इनवर्स एग्जिस्ट होगा बैंड में? व्हाट्स इट्स इनवर्स अगर है इसका इनवर्स? Yes? Okay, itself. So then we have this equation. Then we have this A is equal to A. So therefore inverse of A is A. Therefore inverse of A is A. Okay, inverse of A is A. But inverse is not unique in general. Like now so ये तो एग्जाम्पल है आपके पास एक. नाउ लेट आप एग्जाम्पल 1 लीजिए, एग्जाम्पल 2 जहाँ पर मैं दिखा दूंगा इनवर्सेस बहुत सारे हैं. इनफैक्ट अगर मैं ऐसा सेमी ग्रुप आपको दूंगा, आप A को फिक्स करोगे, इसका इस सेमी ग्रुप का एलिमेंट है A को फिक्स, देन यू विल सी दैट जो भी S का एलिमेंट है या वो A है और अदर देन A, वो इस A का इनवर्स है. तो S में अगर सपोज 10 एलिमेंट्स है, 10 के 10 एलिमेंट्स A के इनवर्स है. रेक्टेंगुलर बैंड में. ओके, राइट, रेक्टेंगुलर बैंड. So let S be a rectangular band. Let S be a rectangular band. Then for all A, B in S we have ABA is equal to A and BAB is equal to B. So therefore if A is in S, then for all then every B belongs to S is an inverse of A. Then so given A belongs to, okay, given A, so let's write here given A belongs, given means you fix this, you know, given A belongs to A, then every element of S is its inverse, is its inverse. क्योंकि जो भी B आप S का लोगे, A B A के बराबर होगा और B A B B के बराबर. So notation for inverse, let S be a semigroup
let S be a semigroup, and A belongs to S, then by V of A we shall mean as set of inverses of A, set of inverses of A. So if S is a rectangular band, if S is a rectangular band, then for all A belongs to S, VA, set of inverse of A, is whole S. It's whole S. आपके लिए एक असाइनमेंट है, let x equal to 1, 2, 3 and S equal to the transform semigroup Tx. Find the inverses, the inverse of each element of S, each element of S. S के हर किसी एलिमेंट का इन्वर्स निकालिए, and you will see that हर किसी कुछ एलिमेंट्स के एक ही इन्वर्स होगा, बट देयर आर एलिमेंट्स व्हिच कंटेन्स मोर देन वन इन्वर्सेस. ये आप देख सकते हैं. इन्वर्स ऑफ ही आपको निकालना है. So let's see this egg box. If A is an element of a regular D class, A is an element of a regular D class, then it has an inverse because every element of D is regular, so that means A is regular. So that, and you have seen that if A is a regular element, then it possesses inverse. And let A prime be its inverse, आप इसको एक्सरसाइज की फॉर्म में ही लिख दीजिए या असाइनमेंट की फॉर्म में. So if A is an element of a regular D class in a semigroup S, okay, and A dash be its inverse, then show that this A is or related to AA dash, AA prime, and AA prime is L related to A prime. Okay, and you also verify this. A prime A is or related to A prime. Okay, or you can say A prime is a or related. That follows from the first one actually. And A prime A, okay, here it's A prime. So here we must have then A prime A is L related to A. L related to A. Okay. Okay. So can you do this this exercise? हमने एक एक्सरसाइज की है. अगर ax a के बराबर होगा, मतलब a अगर रेगुलर होगा और ax a के बराबर होगा, then x a is L related to A. ये हमने अभी किया है प्रूव. अगर ax a
ए के बराबर है रेगुलर डी क्लास में